Very good evening, all of you. Hope you all are doing well. Let's start with today's session. Quick recap of yesterday's session. Yesterday, we started with control flow instructions, right? Then the classification I told you, selection statement or conditional statement. Second, iterative or loops. And the third, transfer instructions. So in that first category, that is conditional or selection statement, we started with that. And in that first category, we discussed simple if else, then multiple if else, right? Now, in that only one more is remaining, that is switch statement. Okay. So what does switch statement do? So it will run any code block from multiple code block based on the value matched with the expression. Means you are having an expression and it is going to match the value of that expression with different values. Okay. And that different values will have different blocks associated with it. Means with every value, there will be one block of code. With every value, there will be a block of code. Getting? There can be a default code also. A default code, which is not necessary, it's not mandatory, but with every value, there is a block of code associated. So in case of switch statement, it is also a selection statement only. It comes under selection category. So switch statement will run any one code block from many code blocks selectively based on value matched with the expression. So there will be an expression will be evaluated, and the result of that expression is matched with the values. Getting? Now, like modern Java, there are no enhanced switches provided. This is the traditional way. So switch will take a expression and the result of that expression will be matched with the values, and with whichever value that expression matches, its associated code block is executed. Getting? Okay, so that is the basic provision. General syntax, I tell you. So execute different code blocks based on different values of an expression. So many code blocks are there. And from that, any one code block will get executed selectively. Any one code block will get executed selectively. But the selection is done on what basis? By matching the value with an expression. And with every code block, there is an associated value. With every code block, some value is associated. And then at runtime, an expression is evaluated, and the value of that expression is matched with those values. So with whichever value it is matching, its associated code block executes. Okay. General syntax, I tell you. Switch is a keyword. Switch keyword. Then in round bracket, you have to pass that expression. And then the body of that switch is within open brace, close brace. Okay. Entire switch case can be empty. If someone asks, is empty switch case a valid switch case? Yes, 100%. Grammatically, it is correct. Syntactically, it is correct to have an empty switch case. Though it is meaningless, though it is of no meaning, but grammar allows to have an empty switch case. Open brace, close brace, nothing within it. Okay, so switch is the keyword, then round bracket, you have to pass an expression, then the entire body of that switch is between open brace, close brace. Now within that, there can be many code blocks. And with every code block, there is a value associated like this. Case, value, colon, then the code. Case, again value, colon, then the code. There is a default code block also. Okay. Now remember, with every code block, you need to have a break. If you don't put break, it is not an error.
If you don't put a break, it's not an error, there will be a fall through. Fall through meaning what? It will continue running the next code blocks also. Like for example, in this first case, there is no break and the expression is evaluated. You are evaluating the expression and the result of that expression is matched with value 1. अगर ये expression का result किसके साथ match हुआ? Value 1. तो ये कोड रन होगा, बट ब्रेक ही नहीं है तो फॉल थ्रू होगा और अगले केस का भी कोड रन करेगा. So this will go till it doesn't encounter break or till switch case doesn't get over. ये फॉल थ्रू कब तक चलेगा? So गिरते हुए जा रहा है, it's falling down and it is going to the next block, again to the next till it doesn't encounter break. मीन्स एक तो जब तक उसको ब्रेक नहीं एनकाउंटर हो रहा है या जब तक स्विच केस खत्म नहीं हो रहा है तब तक चलते ही रहेगा. तो it is a good practice that you have to put a break. Like when you know when the expression matches with that value and you only want to run that code, and after running the code you have to come out of that switch, then put break. Getting? So break will terminate that switch and take the control out of that switch. Okay, I hope it is clear. Then these values cannot be repeated. If there is a repeated case, it will give a error. Like if you are writing case 5 and again case 2 plus 3. Now 2 plus 3 is also 5. It is a syntactic error. So case values cannot be duplicate. Not necessary they should be in the order. Like if it is case 5, then case 2, case first is 5 and then 2 will work. So not necessary they should be in the order. Next, they cannot be duplicate, which I have already told you. Okay. Then this default, when it is executed, when the expression doesn't match with any of the value. If the expression doesn't match with any of the values, then finally it runs default. Last में किसको run करेगा? Default. Okay. So generally we type default at the end, but it is not compulsory you have to write default at the end. I can write default in the beginning, somewhere in between. डिफॉल्ट कहीं भी लिख सकते हो, वो रन तभी होगा जब एक्सप्रेशन किसी भी वैल्यूज के साथ मैच नहीं होता है. When expression doesn't match with any of the value, that time it runs default. Default is not compulsory. ऐसा जरूरी नहीं कि डिफॉल्ट होना ही चाहिए, रहेगा तो वो लास्ट में ही होना चाहिए, ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है. अब बिगिनिंग में लिखो, बीच में लिखो, लास्ट में लिखो. जनरली लास्ट में क्यों लिखना है? कॉमन सेंस है ना कि जब एक्सप्रेशन किसी भी वैल्यू के साथ नहीं मैच हुआ तो लास्ट में डिफॉल्ट रन. इसलिए यूजुअली practice, a good practice is we write at the end. But when default is executed, when none of the values match, कंपल्सरी नहीं है. लास्ट में ही लिखना ऐसा कोई जरूरी नहीं, कहीं भी बीच में लिख सकते हो. ठीक है. वैल्यूज रिपीट नहीं हो सकते, ऑर्डर में ही होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं. ब्रेक कंपल्सरी नहीं होता है, अगर नहीं लिखा तो फॉल थ्रू होगा. इट विल कंटिन्यू रनिंग द नेक्स्ट ब्लॉक्स ऑल्सो. ठीक है. ओके. बट क्यों ब्रेक लिखना चाहिए? व्हेन यू आर डन विद दैट कोड एंड यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट स्विच, देन गुड प्रैक्टिस, राइट ब्रेक. ये वैल्यूज इंटीजर्स हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, ऐसा कुछ रूल नहीं है. जावा में काफी कंडीशंस थे, जिनको जावा थोड़े बहुत आता है दे कैन फाइंड आउट. करेक्ट. एकदम इनिशियल वर्जन का जावा, फिर जावा 8 ने क्या ऐड किया, जावा 5 ने ऐड क्या किया, बाद में जावा 21 में क्या हुआ, ऐसे हर एक जावा के वर्जन्स में चेंजेस होते जाते हैं. बट यहाँ स्ट्रिंग भी अलाउड है. ओके. नंबर्स भी अलाउड है. ओके. तो सिंटैक्स इज क्लियर टू यू what it is doing? Just quick confirmation. So it takes the Yes, sir. expression, Yes, it sir. takes the expression, then evaluates that expression, matches it with these values. With whichever value that expression match, its code is executed.
And if there is a break, it will come out of the switch. If no break, it will continue running the next blocks, that is fall through, and it will keep running the next block till it doesn't get break or switch case doesn't get over. Okay, वैल्यूज डुप्लीकेट नहीं चाहिए, ऑर्डर में ही होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं। ब्रेक मैंडेटरी नहीं है, बट लिखना गुड प्रैक्टिस है। डिफॉल्ट कब रन होगा? व्हेन नन ऑफ द केस मैच, देन रन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट लास्ट में ही लिखना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं, कहीं भी लिख सकते हो, यूजुअली लास्ट लिखते हैं। होना ही चाहिए ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सी, लेट डे, डे नाम का एक वेरिएबल लिया है मैंने। लेट डे इक्वल टू एंड मंडे लिखा है। Let day equal to Monday. Any string you can put, and then you're passing it to switch case. Case day. Okay? देखो, case Monday रहेगा तो start of the work week. Break. ये console bar. If it is Friday, almost weekend, break. अभी सैटरडे एंड संडे है तो मैंने इधर ब्रेक नहीं लिखा है, तो अगर ये डे सैटरडे को मैच हुआ तो भी ये वाला ही कोड रन करेगा, संडे रहेगा तो भी यही कोड। फॉल थ्रू हुआ है ना, गेटिंग? यहां फॉल थ्रू का कंसेप्ट हुआ। देखो, अगर डे सैटरडे इट मैचेस बट देयर इज नो ब्रेक, तो फॉल थ्रू इट विल कंटिन्यू नेक्स्ट ब्लॉक। एंड अगर संडे है तो डायरेक्ट यही आएगा, वीकेंड। दिस इज जस्ट अ मोर एलिगेंट एंड सिस्टमेटिक वे ऑफ लैडर इफेल्स। लैडर इफेल्स लिखते हैं उसकी जगह पे ये ज्यादा सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ब्रेक, and if the day is not Monday also, Friday also, or Saturday or Sunday, then it is Tuesday, Wednesday, Thursday. So it is midweek day. Getting? डिफॉल्ट को ब्रेक देने की जरूरत नहीं क्योंकि एनीवे लास्ट लिखा है, तो उसके बाद वैसे भी स्विच केस खत्म हो रहा है। ओके, होप इट इज क्लियर। इफ यू वांट, मैं यहां क्विकली एक सिंपल एक्सरसाइज दिखा देता हूं। स्विच डेमो लेते हैं। Whatever, you can change it and see. Later, I'll show you how to take inputs through form or through prompts and then solve some exercises. ठीक है? Switch skeleton चाहिए तो ले लो, देखो इसने ready skeleton दे दिया। यहाँ पास क्या करना है हमें? Day, value, okay. Suppose another case, you can just copy paste and do some changes. Saturday or Sunday, then and finally एक default है, right? And you know, semicolon is not mandatory in JavaScript. ठीक है? Now, depending on what value is there in day, accordingly it will go into the respective, see, start of week. Here we will just try to change it. Like I'm creating, here I'm putting Wednesday.
Now, when it is Wednesday, it is not matching with Monday, not Friday, not Saturday, Sunday. It will directly come to default and give message I am working, right? If I put Saturday, run. Now Saturday doesn't match with Monday, Friday. Yes, but here there is no code and break. Therefore, fall through and it will come to case Sunday, isn't it? Enjoying weekend and then break, come out of it. So this way, there can be many other applications where switch can be used. I'll give you exercises, don't worry. When all these concepts are over, so based on that concept, we will be solving some programs. Okay. Then next, one more operator we are learning. Now you'll say we already done with the operator. So associated with this, the topic which is going on, that is selection statement or conditional statement. So associated with that, we have one ternary operator, okay, called as conditional operator, question mark, colon. So first three, it's a ternary operator. So three parts will be there. First part is the condition, then question mark, then expression one, colon. It's a ternary operator. Therefore, three operands are there. Two operators, three operands, and expression two. Remember, this is also short circuit evaluation. Huh? It will not fully evaluate all three. तीनों को पहले से ही evaluate करके नहीं रखेगा. It will only evaluate condition. If the condition is true, if this condition is true, it will evaluate expression 1 and return that result. But if the condition is false, it will evaluate expression 2 and return the result of it. मीन दोनों में से किसी एक का ही रिजल्ट आएगा, दोनों को इवेलुएट करके नहीं रखेगा. इट डजंट डू फुल्ली इवेलुएशन. ठीक है, जैसे लॉजिकल एंड एंड और, याद है ना, और नलिशिंग टू क्वेश्चन मार्क. तो याद रखो, कंडीशन पहले इवेलुएट होगा, ट्रू आया तो एक्सप्रेशन वन को इवेलुएट करके उसका आंसर रिटर्न करेगा. एंड इफ द कंडीशन कम्स फॉल्स, देन इट विल इवेलुएट एक्सप्रेशन टू एंड द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन टू विल बी रिटर्न. ठीक है. C. Shorthand for simple if else. But expression 2 and expression 3, sorry, 1 and 2, अगर blocks वगैरह है तो ये नहीं चलेगा. Then go for standard if else only. ये तब यूज करो जब simple expressions है. If part में, else part में. अगर कंडीशन ट्रू है तो एक सिंपल एक्सप्रेशन है, else part में एक सिंपल. अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक है, बड़ा ब्लॉक है, तो फिर ये नहीं चलेगा. देन यूज स्टैंडर्ड इफ एल्स. ठीक है. तो शॉर्ट हैंड फॉर सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट, सिंटैक्स, इट्स लाइक दैट. कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, expression when it is true, and expression when it is false. Evaluate the condition. If it is coming true, this expression is evaluated, and if it is false, then the other expression is evaluated. As an example, see, I've created one variable age. Let age equal to 20. I'm checking whether age is greater than equal to 18. If this condition is true, string eligible will come in can drive. Otherwise, not eligible will come in can drive. And that can drive variable we are printing. Can drive is going to be a string variable because string is getting copied in it. Age is a number variable. Okay. Example, I hope you're understanding. Right? Yes, sir. Just take simple example of conditional or ternary.
Instead of that, we'll take some another example. Suppose we are finding maximum of three numbers. Okay. So how to accept that three numbers, right? So one easiest way is by using one ready dialog called prompt. Okay, which JavaScript has given. You can give the message like enter first number. But only the problem is this prompt will give you a ready-made dialog. One ready-made dialog will come in which it will allow you to enter a value. But whatever value you enter, prompt returns it, but it returns it in a string form. But you want it as a number, then you can do casting. Modern approach is use number. ठीक है ऐसे कास्ट करो ओल्ड जावास्क्रिप्ट अप्रोच है पार्सिंट या पार्स फ्लोट यूज करने का तो better go with the modern things. So prompt will show you a ready-made dialog. एक ready-made dialog आएगा. In that dialog ये message रहेगा enter first number और एक text box रहेगा जिसमें हमें टाइप करने का प्रोविजन है. वो टेक्स्ट बॉक्स में आपने एंटर कर दिया जो भी है whatever you have entered एंड उधर एक ओके बटन रहेगा तो ओके पे क्लिक कर दिया तो whatever you have entered is returned by prompt. प्रॉम्प्ट रिटर्न कर देगा अगर आपने 35 एंटर किया है 25 एंटर बट प्रॉम्प्ट वो जो 35 रिटर्न करता है एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा तो वो स्ट्रिंग मैंने ये नंबर फंक्शन को दिया उसने नंबर में कन्वर्ट किया सेम वे और दो नंबर्स लेता हूं ठीक है देखो एज ये लेट है तो लेट रीडिक्लेरेशन नहीं देता है इसलिए एरर आता है ओके तो एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकेंड नंबर एंटर थर्ड नंबर right? Now you have to find out maximum of this three. ये तीनों का मैक्सिमम यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर ऑब्वियसली बिकॉज मैं अभी वही टॉपिक पे था ना टर्नरी तो ये एग्जांपल मैंने लिया मींस ऑब्वियसली मेरा इंटेंशन है यूज ऑफ टर्नरी तो टर्नरी ऑपरेटर यूज करके फाइंड आउट करो इसमें से कौन मैक्स है और वो ये वेरिएबल में डालो ओके ठीक है देखो फर्स्ट विल चेक वेदर ए इज ग्रेटर देन बी ट्रू पहले चेक करेंगे ए बी से ग्रेटर है क्या ट्रू तो एक पार्ट नहीं तो दूसरा पार्ट समझ लो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ये ब्रैकेट में जाएगा नहीं तो ये ब्रैकेट में जाएगा अगर पहले ब्रैकेट में है तो ऑलरेडी कंफर्म्ड है ए ग्रेटर देन बी तो जस्ट चेक करो ए ग्रेटर देन सी है क्या यस तो ए मैक्सिमम अदरवाइज बी मैक्सिमम सॉरी सी मैक्सिमम ये पहला पार्ट से तो ऑलरेडी कंफर्म्ड है कि ए ग्रेटर देन बी ए ग्रेटर देन बी यस तो अंदर आके आपने ए एंड सी चेक किया अगर ए ग्रेटर देन सी है तो ए मैक्सिमम नहीं तो सी मैक्सिमम बट ये एल्स पार्ट में आया तो ए ग्रेटर देन बी नहीं है ए इज नॉट ग्रेटर देन बी देन चेक वेदर बी एंड सी बी इज ग्रेटर देन सी इफ बी इज ग्रेटर देन सी देन बी इज मैक्सिमम अदरवाइज सी इज मैक्सिमम ठीक है आप लोग कोई भी वैल्यूज देखो कंपेयर करके देखो right? I'm having 8, I'm having 2, I'm having 5. Tell me, is A greater than B? Is 2 greater than 8? A and B का comparison. Is A greater than B? Yes. है ना 8 greater than 2 है तो ये ब्रैकेट में आएगा अभी 8 एंड 5 चेक करेगा तो 8 एंड 5 में कौन ग्रेटर है 8 दैट इज द ए तो वो प्रिंट और ये 5 की जगह पे अगर 15 रहता था तो 15 मैक्सिमम राइट एंड अगर ए एंड बी ग्रेटर नहीं है तो बी एंड सी का चेकिंग होगा इस साइड अब जो भी मैक्स आया है वो प्रिंट करो कंसोल डॉट लॉग अगर मैं कंसोल पे प्रिंट करना चाहता हूं अगर स्ट्रिंग्स इंटरपोलेट होना चाहिए तो यू हैव टू यूज दिस बैकटिक ये बैकटिक वाले स्ट्रिंग्स यूज करने के ठीक है इसमें आप प्रिंट कर सकते हैं मैक्स ऑफ
डॉलर ब्रेस ब्रैकेट ए कॉमा डॉलर ब्रेस ब्रैकेट बी कॉमा डॉलर ब्रेस ब्रैकेट सी इक्वल टू डॉलर ब्रेस ब्रैकेट मैक्स। ओके, तो वेन एवर यू आर राइटिंग अ बैक टिक वाली स्ट्रिंग लिखते हो, कोई भी स्ट्रिंग जब बैक टिक से शुरू एंड एंड होती है, बैक टिक है, इट इज नॉट सिंगल कोट डबल कोट एंड बैक टिक। तो बैक टिक वाली स्ट्रिंग हमेशा इंटरपोलेट होती है। इंटरपोलेट मीनिंग उस स्ट्रिंग के अंदर जहां कहीं वेरिएबल्स आएंगे वो उसके वैल्यू से रिप्लेस हो जाएंगे। गेटिंग? ओके, सी सी इज इट गिविंग यू अ प्रॉम्प्ट डायलॉग? पहला आ गया, इंटर फर्स्ट नंबर, सपोज मैं देता हूं 56। ओके, सेकंड आ गया, इंटर सेकंड नंबर, आई एम गिविंग 23, then maybe I'm giving 120. Okay. Now here you can see. Is it displaying max of 56, comma 20 minute? Here can you see mistake क्या हुआ? ब्रेस ब्रैकेट बी ही वापस लिखा है, इसलिए बी ही ट्वाइस आ गया। ओके, रीरन करके देखो। Whatever, 45, 78, 26, and check here. 45, 78, 26. Who is max? 78. कैन यू सी जो बैकटिक वाले स्ट्रिंग्स है उसमें जहां कहीं डॉलर ब्रेस ब्रैकेट वेरिएबल है, इट इज गोइंग टू सब्सटीट्यूट इट विथ इट्स वैल्यू। ये सब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ने फीचर्स ऐड किए हुए हैं। ठीक है। हाँ, अगर आपको ये आंसर भी ऐसे डायलॉग में ही दिखाना है तो फिर एक अलर्ट होता है, जैसे प्रॉम्प्ट है वैसे एक अलर्ट होता है, तो अलर्ट में ये स्ट्रिंग दिखा सकते हो। ठीक है, कंसोल पे भी दिखाते हैं, देखो आई विल शो यू एंड वी विल शो इट ऑन द अलर्ट एंड वो स्ट्रिंग भेज देगा। It will show it in a dialog. See, whatever, 67, 90, 23. See, ये अलर्ट भी एक डायलॉग ही है एंड वो डायलॉग में वही आ रहा है, मैक्स ऑफ 67, 90, 23 इक्वल टू 90। ओके, ठीक है, जस्ट क्विक कंफर्मेशन। यहाँ पर एक मेरे को डाउट था कि बिना अलर्ट के हम लोगों को मतलब कि यूजर इनपुट पेज में कैसे मिल जा रहा है? बिना इनपुट, ये बिना प्रॉम्प्ट अलर्ट है ना, के। ओके, प्रॉम्प्ट से मिल रहा है ना? प्रॉम्प्ट से इनपुट आया एंड अलर्ट से आउटपुट जनरेट कर रहे हो, ये दो अलग है ना। प्रॉम्प्ट जब मैंने रन किया तो प्रॉम्प्ट ने एक डायलॉग दिया ना हमें, सी ये, जिसमें एक टेक्स्ट बॉक्स है और यहां मैं एंटर कर रहा था 56। ओके, फिर और एक आ गया 34। यहाँ आपका शायद ट्रैक डाइवर्ट होके कोई और काम में चले गया शायद। ठीक है, देखा, तो वो तीन वैल्यूज आ गए ना ये प्रॉम्प्ट से, तो वो हाँ स्ट्रिंग थे, हाँ। स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट किया, फिर मैंने वो तीन वैल्यूज का मैक्स निकाल लिया एंड फिर मैंने अलर्ट से वो आउटपुट दिया। ओके, हाँ ठीक। चलो अभी आगे मूव करते हैं। नाउ वी विल मूव इनटू सेकंड कैटेगरी स्टेटमेंट इन कंट्रोल फ्लो। एक कैटेगरी पूरा हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट। सेकंड कम्स, दैट इज लूप स्टेटमेंट, repetitive statement, iterative statement, or loop. In this, we are performing some code block repeatedly for some number of times or till some condition doesn't become false or till the condition is true. तो जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक रिपीट करते रहो और जैसी कंडीशन फॉल्स हो गया स्टॉप करो, या फिर किसी नंबर ऑफ टाइम्स के लिए।
अगर काउंट आपको पता है तो उतने टाइम्स एक्टिविटी रिपीट करनी है। ठीक है। एक्चुअली जनरली इनको वैसे क्लासिफाई करते हैं एज लॉजिकली कंट्रोल्ड। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, नथिंग कंसर्न्ड विद जावास्क्रिप्ट। इन जनरल हर लैंग्वेज में एक तो लूप्स को लॉजिकली कंट्रोल्ड या फिर एन्यूमरेशन कंट्रोल। लॉजिकली कंट्रोल्ड मींस टिल द कंडीशन डजंट बिकम फॉल्स। अभी हमें पता नहीं वो कंडीशन कब फॉल्स होगा। तो जब तक एक कोई कंडीशन है आपने सेट की है कि टिल यू आर नॉट रीचिंग टिल द एंड ऑफ द फाइल, और फ्रॉम द अदर टर्मिनल यू आर नॉट गेटिंग इंडिकेशन स्टॉप, तो चलने दो। गेटिंग? तो टिल द कंडीशन डजंट बिकम फॉल्स, कीप रिपीटिंग। So such type of loops are called logically controlled. And when we know the loop is going for some fixed set of values, fixed set means वो fixed increasing values भी हो सकते हैं 1 2 3, और कोई लिस्ट ऑफ वैल्यूज है आपके अरे में या ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज है, एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, एंड ओनली फॉर दैट लिस्ट ऑफ वैल्यूज व्हेन द लूप विल गो, देन वी कॉल एन्यूमरेशन। वो लिस्ट करना, लिस्टिंग करने को ही एन्यूमरेट करना ऐसे कहते हैं। When you are listing something, we say we are enumerating everything one by one. Okay. So when it goes for a fixed set of values, it is enumeration. And when the loop goes till some condition doesn't become false, it is logically. Then कुछ लोग loops को ऐसे भी क्लासिफाई करते हैं कि कहाँ टर्मिनेशन का कंडीशन टेस्ट हो रहा है। तो टर्मिनेशन का जो कंडीशन होता है वो कहीं ना कहीं तो टेस्ट करना पड़ेगा। So if it is in the beginning, it is called as entry test. Getting? Entry test, generally while loop, for loop. While loop, for loop come under entry test. Getting? Then we have exit test. तो do while loop होता है जहां कंडीशन एंड में, मीन्स ये आपका ब्लॉक है जो रिपीट हो रहा है, बट एंट्री पे ही हम कंडीशन टेस्ट करते हैं। सो आपका लूप बॉडी कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? जीरो और मोर टाइम। जीरो और मोर टाइम। वाई? बिकॉज एंट्री पे ही अगर कंडीशन फॉल्स है, एंट्री पे ही फॉल्स, तो ये ब्लॉक एक बार भी रन ना हो। अंडरस्टैंडिंग? देयरफॉर एंट्री टेस्ट। और एक होता है एग्जिट टेस्ट जहां कंडीशन एंड में चेक होती है। तो कम से कम एक बार ब्लॉक रन करेगा ही एंड फिर कंडीशन टेस्ट करेगा। तो उसमें डू व्हाइल लूप आता है, एग्जिट। एंड एक इनफाइनाइट लूप होता है, इनफाइनाइट चल रहा है तो हम लोग फोर्सिबली उसमें से बाहर निकल रहे हैं, उसको मिड टेस्ट कहते हैं। Getting? तो एंट्री टेस्ट, एग्जिट टेस्ट एंड मिड टेस्ट। मिड टेस्ट जनरली इनफाइनाइट लूप्स के लिए रहता है, मींस लूप इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, तो बाय सम मींस यू हैव टू जंप आउट ऑफ दैट लूप। सो इनसाइड यूल चेक द कंडीशन एंड ब्रेक द लूप। अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्रेक करके बाहर आ जाओ, तब मिड टेस्ट आता है। एग्जिट टेस्ट एट द एंड, एंट्री टेस्ट at the beginning. It is like you can say when you go to a movie, when you go to watch a movie, मल्टीप्लेक्स थिएटर्स को मूवी देखने जाते हो तो पहले आपको टिकट निकालना पड़ता है। अब वैसे बोल नहीं सकते ना, पहले मूवी देख लेता है, अच्छी रहेगी तो हम पैसे देंगे, नहीं तो हम लोग पैसा नहीं देंगे। Getting? Which many students tell to me also that I'll attend few sessions, if I like then I'll give you fees. So that provision is not there. Okay, तो एंट्री टेस्ट मीनिंग वहां मूवी देखने जाते हो तो पहले टिकट निकालना पड़ेगा, एंड फिर एंट्री पे वो एक होता है ना मुस्तंडा, एक ऐसा बाउंसर होता है जो चेक करता है आपकी टिकट, एंड वैलिड है तो ही अंदर जाते हैं, इट अलाउज यू। तो दैट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंट्री टेस्ट। एंड रेस्टोरेंट में जाते हो तो पहले ही पैसे भर के वो नहीं होता है ना, रेस्टोरेंट में जाते हो, एंजॉय करते हो, ऑर्डर करते हो, खाते हो, एंड फिर निकलते समय बिल पे करते हो, तो दैट इज एग्जिट। गेटिंग गाइस? ओके। सो रिलेट करने आना चाहिए। एंड एक याद रखना है, जब भी आप लूप से डील करते हो तो whenever you are dealing with loops, there is some concept called counter। ये आता ही है, यानी ये by default है। तो what are counters?
Counters, or they're also called as loop controlling variables. Okay, so counters bolo ya loop controlling variable. So what it is? So it's a variable which is keeping track of how many times the iterations are performed till now. Correct? So it's a variable which is going to keep track of number of iterations done. अब तक कितने iterations हुए हैं उसका ट्रैक कौन मेंटेन करता है? ये काउंटर. एंड ऑलवेज ये काउंटर किसमें इन्वॉल्व रहता है? कंडीशंस में. जो वो एंट्री टेस्ट होती है ना, या एग्जिट टेस्ट या मिड टेस्ट, तो वहां कंडीशन लगेगा. तो वो कंडीशंस में कौन जनरली इन्वॉल्व रहेगा? लाइक दिस, आई लेस देन इक्वल टू 10. तो ये कंडीशन है. ये कंडीशन में ये काउंटर पक्का इन्वॉल्व रहता है. एंड बॉडी में कहीं ना कहीं तो ये काउंटर अपडेट होते रहता है. और वो अपडेशन इस तरह से करना है कि नियर फ्यूचर में ये कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए. मीन्स यू शुड गो वन स्टेप नियर टू 10. 10 से दूर नहीं जाना है, 10 के एक एक पास जाना है. करेक्ट? मूवीज में होता है ना, बीच पे इधर से हीरोइन भागती रहती है, यहां से हीरो भागते रहता है, तो कैमरा जस्ट इससे ऊपर इधर से, तो देखा रहेगा कि एक स्टेप वो आगे जा रहा है, एक स्टेप ये आगे जा रही है, एंड कभी ना कभी तो वो मिल जाते हैं. करेक्ट? तो व्हाट इज हैपनिंग? दे आर मूविंग वन स्टेप नियर टू देयर गोल. उनका गोल क्या है? मिलना. तो वो एक स्टेप पास, यहां भी वैसी है. ये काउंटर्स इस तरह से अपडेट करने चाहिए कि नियर फ्यूचर में ये कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए. नहीं तो व्हाट विल हैपन? इट विल नेवर बिकम फॉल्स एंड द लूप विल गो इनटू इनफाइनाइट. तो याद रखो, हमेशा लूप्स जब भी आएंगे तो ये काउंटर कंसेप्ट आएगा ही आएगा. व्हाट इज द काउंटर? It's a variable which is controlling your loop. In short, it's a variable which keeps the track of, or which keeps the count of how many iterations are done till now. Always involved in the condition and always within the loop body, it is getting updated. And the updation is done in such a way that in the near future, the condition become false. It is going one step near to termination. टर्मिनेशन के पास जा रहा है. पास जा रहा है, वो दूर नहीं जा रहा. पास जाएगा तभी तो कभी ना कभी तो लूप स्टॉप होना चाहिए कि नहीं? ओके. फिर क्या अलग अलग टाइप के लूप्स जावास्क्रिप्ट में भी है, वो देखता है एक एक करके. जावास्क्रिप्ट में काफी अलग अलग टाइप के लूप्स है. स्टैंडर्ड तीन तो है ही, विच कम फ्रॉम जावा या सी लाइक लैंग्वेज. For loop, while loop, do while loop. Then they have given one called as for in, then for off, जो specially objects and arrays के लिए होता है. Okay, so loops allow you to execute a block of code repeatedly. Any code block, when you want to execute it again and again, then use loop. उसमें से पहला देखता है for loop. क्विकली. ओके, सब लूप्स. अभी कुछ लूप्स आपको नोन है तो क्वाइट इजी भी लगेगा. ठीक है. बट एनीवे, आई कैनॉट स्किप, आई कैनॉट जस्ट आस्क यू डू यू नो फॉर लूप. आपने यस बोला तो आई जस्ट स्किप एंड गो टू द नेक्स्ट. ऐसा नहीं हो सकता है. कायदे से जाएंगे. बाय द प्रोसेस वी विल गो. नो तो भी रिवाइज कर लो. ठीक है. तो फॉर लूप इज हैविंग, फॉर लूप इज अ एंट्री कंट्रोल. फॉर लूप कम्स अंडर एंट्री कंट्रोल. मीन्स यहाँ कंडीशन किधर टेस्ट की जाएगी? बिगनिंग में, एंट्री पे ही कंडीशन टेस्ट. therefore for loop executes the code block how many times? Zero or more time. Zero or more. Why? Because in the beginning only, if the condition is false, it will not run the code block single time also. Okay, so here comes the keyword for. पहले आएगा कीवर्ड फॉर. फिर पहला पार्ट आएगा, दैट इज इनिशियलाइजेशन. डिक्लेयर भी कर सकते हो. डिक्लेयर कम इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन ऑफ व्हाट? अब भी मैंने बताया, काउंटर. जो लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है काउंटर, तो उसको कुछ इनिशियल वैल्यू देने का काम यहां करो. सेपरेट बाय सेमीकोलन. देन कम्स कंडीशन.
Then comes updation. Updation can be increment also, decrement also. It depends on how the initialization is. Whether you're starting from lower value and going till higher, increment. हायर से लोअर पे आ रहे हो तो डिक्रीमेंट. वो अभी कॉमन सेंस है. ये सब चीजें बाय एक्सपीरियंस आते हैं. जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो आपको पता चलेगा. ठीक है. एंड फिर कोड ब्लॉक. वट एवर द कोड योर फॉर लूप इज सपोज टू डू. एंड मैंने ऑलरेडी कहा है, भले एक लाइन रहने दो या एक से ज्यादा लाइन, ब्रैकेट में लिखने की आदत करो. जो कंपलसरी नहीं होता है. अगर एक लाइन रहेगा तो एक्चुअली ब्रैकेट का कोई जरूरत नहीं है. बट लिखा तो गुड प्रैक्टिस है ना. Why? Because in the near future, if you're adding more lines, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट एंटर करो और लाइन से ऐड करो क्योंकि आपने पहले ही ब्रैकेट डाल के रखा हुआ है. एग्रीड. नाउ हाउ दिस वर्क्स. इसका वर्किंग कैसे होता है देखो. फर्स्ट इट विल कम टू इनिशियलाइजेशन. नाउ इनिशियलाइजेशन कम डिक्लेरेशन बोथ अलाउड है. यही अगर लेट लिखा है तो इट विल डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज. बट इन दैट केस एज इट इज लेट, its scope will be only for loop. भूलो मत, एक टॉपिक हुआ है अपना, वेर, लेट, कॉन्स्ट एंड नॉट राइटिंग एनीथिंग. इनके ऊपर अपने पूरा प्रॉपर एक या दो लेक्चर गए उस पे. सो लेट से किया रहेगा तो वो फॉर लूप तक ही रिस्ट्रिक्टेड है. तो यू विल हैव अ काउंटर. दैट काउंटर you will give some initial value over here. This part is executed only once and the first time in the life of that for loop. फॉर लूप के लाइफ में एक ही बार और पहली बार क्या रन होता है, ये इनिशियलाइजेशन. आफ्टर दैट इट कम्स टू कंडीशन. एंड जनरली कंडीशन में वो काउंटर इन्वॉल्व रहेगा. इफ द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, दिस इज वन. नाउ दिस इज सेकेंड स्टेप. ट्रू, इट विल एंटर इनसाइड द ब्लॉक फॉर लूप बॉडी. Run this code block, that is 3, and then come to the updation, that is 4. After updation is done, it will again come back to the condition and it will go on. If the condition is again true, come inside, perform the code block, again come to the updation, again check the condition, still true, again run the code block, going on. Condition true, run the code block, update, again check the condition. But if the condition is false, then from here, it will directly come to the statement which is out of that for body. ये फॉर बॉडी के बाहर जो भी लाइन है डायरेक्टली कंट्रोल वहां आ जाएगा. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. ये तीनों पार्ट एक्चुअली ऑप्शनल होते हैं. तीनों पार्ट आप ड्रॉप कर सकते हो. मैं इफ यू आर, बट सेमीकोलन लिखना है. इनिशियलाइजेशन यहां नहीं किया, बाहर ही पहले ही करके रखा है, चलेगा. कंडीशन लिखा है नहीं, अंदर लिखा है इफ में. इफ कंडीशन ट्रू देन ब्रेक. गेटिंग. तो ये पार्ट भी ड्रॉप हो सकता है. ये अपडेशन यहां नहीं लिखा है, इधर कोड ब्लॉक में लास्ट में लिखा है, तो भी पॉसिबल. गेटिंग. बट फिर क्यों यूज करने का फॉर लूप. फॉर लूप का वही तो बेनिफिट है कि ऑल द थ्री थिंग्स इन अ सिस्टमेटिक वे इन वन लाइन यू राइट. दैट इज द रीजन वी हैव टू यूज. तो इसलिए जनरली अंदर अपडेशन करने की जगह पे यही करो, कंडीशन यही लिखो, इनिशियलाइजेशन यही करो. ठीक है. तो इट विल डू द इनिशियलाइजेशन फर्स्ट. After that, it will check the condition. If it is true, it will come inside, run the code block, and then come for updation. After updation, again come to check the condition, and it will keep repeating the code block, updation, check condition. Code block, updation, check condition. ये कब तक चलते रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है. If the condition becomes false, it will stop and continue with the code which is outside that for body. फॉर बॉडी के बाहर जो भी पहला लाइन है वहां से एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होगा. ठीक है. ओके. तो सिंटैक्स क्लियर रहेगा तो मुझे जस्ट कंफर्मेशन दो. तो फॉर लूप यूजुअली कब यूज करना है, व्हेन यू वांट टू परफॉर्म सम कोड ब्लॉक फॉर सम फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स. सो एग्जीक्यूट अ कोड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम.
सिंटैक्स देखो, फॉर पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट। अब मैंने इंक्रीमेंट लिखा है, बट दैट इंक्रीमेंट कैन बी डिक्रीमेंट ऑल्सो। तो डिक्रीमेंट भी तो इंक्रीमेंट ही है ना, ऑफ नेगेटिव वैल्यू। यू आर इंक्रीमेंटिंग विद अ नेगेटिव वैल्यू। इंग्लिश में हम उसको स्पेशल डिक्रीमेंट वर्ड देते हैं, मैथमेटिशियंस कह सकते हैं डिक्रीमेंट भी तो इंक्रीमेंट ही है, इंक्रीमेंटिंग विथ माइनस वैल्यू। एवरी टाइम आई एम इंक्रीमेंटिंग विथ -1। ठीक है। तो एनीवे, अपडेशन एंड देन द कोड विच इज टू बी रिपीटेड। एक लाइन है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, बट गुड प्रैक्टिस पुट ब्रैकेट। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, अंदर मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग, एक स्ट्रिंग लिखी है और वो स्ट्रिंग को ज्वाइन किया ये आई। Remember, JavaScript will automatically convert that I to string, and then this string and this string will get concatenated. Conversion rules yaad rakhna. So first time what will be I? 0. Okay. Here it will come. Then it will check here. Is 0 less than 5? Yes. So it will come inside and do this console.log. Will it print 0? Then it will come to updation. Make it 1. लेट इट बी पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, क्या फर्क पड़ता है? साइड इफेक्ट क्या है? आई एक से बढ़ने वाला है। तो व्हेन इट कम्स टू चेक द कंडीशन अगेन, आई हैज बिकम 1। इज 1 लेस देन 5? यस। कम इनसाइड, प्रिंट आई, अगेन इंक्रीमेंट, it is becoming 2. Is 2 less than 5? Yes. Come inside, print 2, make it 3. Is 3 less than 5? Yes. Come inside, print 3, then make it 4. Then is 4 less than 5? Yes, come inside, print 4, and then I plus plus, make it 5. Now, is 5 less than 5? Less than लिखा है, तो 5 less than 5 है क्या? नहीं, condition false. For loop stop. Continue anything which is after this. Is it clear? Yes, sir. Yes, it's clear. Okay. Simple एक लेता हूँ. For let I equal to 0, I less than 5. आपको for loop का skeleton चाहिए तो भी आ जाता है. For, फिर आपको काउंटर वाला फॉर लूप चाहिए या स्टैंडर्ड फॉर लूप फॉर इन, तो काउंटर मीन्स वो पहला वाला ले लो, एंटर। ये नहीं, देखो आ गया पूरा रेडीमेड। अप्रोप्रिएट एडिट करो, आई इक्वल टू 0, ओके। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन जो भी कंडीशन दिया है, आई प्लस प्लस, कॉमा आई, ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो। सी, इज इट प्रिंटिंग? आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 3। ओके। ऐसे रिवर्स में ले सकते थे, लाइक आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 5 and I'm going to come till 1, तो मैं ग्रेटर देन 0 लिखता हूँ, तो यहाँ डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम आई 5, ठीक है, पहली बार आई 5। इज 5 ग्रेटर देन 0? यस, तो 5 प्रिंट करेगा। फिर 4, 4 ग्रेटर देन 0? यस, तो 4 प्रिंट करके 3, 3 ग्रेटर देन 0? यस, 3 प्रिंट करके 2, 2 ग्रेटर देन 0? यस, 2 प्रिंट करके 1, 1 ग्रेटर देन 0? यस, 1 प्रिंट करके 0। इज 0 ग्रेटर देन 0? नो, स्टॉप। ठीक है। तो ऐसे रिवर्स में भी कर सकते हैं, देखो 5 4 3 2 1, मल्टीपल
वेरिएबल्स भी हो सकता है, जैसे देखो I इक्वल टू 1 लिख रहा हूं एंड J इक्वल टू 1 लिख रहा हूं। ऐसे मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे लेता हूं I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 10 लिखता हूं एंड देन आई एम राइटिंग I लेस देन J। मीन्स जब तक I लेस देन J है तब तक चलने दो। फिर मैं I को इंक्रीमेंट कर रहा हूं और J को डिक्रीमेंट कर रहा हूं। You can have multiple initialization, multiple increment decrement, multiple conditions भी हो सकता है, ठीक है। हर बार मैं I का वैल्यू प्रिंट करूंगा और फिर J का वैल्यू भी प्रिंट करूंगा, कॉमा J, राइट। तो इन दिस केस हाउ इट विल वर्क, कहां से कहां तक। तो फर्स्ट टाइम I 1 है और J 10, तो ये 1 और ये 10, I 1 और J 10। इज 1 लेस देन 10 गाइज? ये 1 है और ये 10। इज 1 लेस देन 10? यस। तो अंदर आके प्रिंट करेगा 1 एंड 10। फिर ये बढ़ता है और ये डिक्रीज होता है, दिस बिकम्स 2 एंड दिस इज 9। इज 2 लेस देन 9? यस, तो 2 एंड 9 प्रिंट होगा। फिर 3 एंड 8, इज 3 लेस देन 8? यस, तो 3 8 प्रिंट होगा। फिर 4 एंड 7, 4 लेस देन 7 है, राइट। फिर 5 एंड 6, इज 5 लेस देन 6? यस। एंड फिर ये क्या बन जाएगा, 6 एंड 5। तो कंडीशन 10 9 8 7 6 5, ठीक है। एंड फिर यहां कंडीशन फेल हो जाएगी एंड जैसे यहां कंडीशन फेल, स्टॉप। तो ये प्रिंट नहीं होगा, इधर तक प्रिंट होगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस अलग अलग बना सकते हैं। सी 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6, 5 6 तक चला क्योंकि 5 लेस देन 6 है, बट उसके बाद स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये 6 बना और ये 5 बना। दिस बिकम्स 6 एंड दिस बिकम्स 5, कंडीशन फेल। ओके। फिर क्विकली और एक लूप बता देते हैं टू वाइंड अप विद टुडेज सेशन। फिर रिमेनिंग लूप्स, फिर कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे एंड फिर फंक्शंस में एंटर करना है हमें। ओके, तो नेक्स्ट इज while loop. While loop is a entry control, like for loop only. For loop जैसे ही entry controlled है। तो कंडीशन ऐसे होता है, while is a keyword, फिर उसके बाद कंडीशन आएगा एंड फिर बॉडी स्टेटमेंट, whatever the code it is supposed to do. So एक लाइन, एक से ज्यादा लाइन, मैंने अभी वो आई डोंट हैव टू रिपीट इट अगेन अगेन। सो एक लाइन है तो ब्लैक ब्रैकेट की जरूरत नहीं, एक से ज्यादा है तो ब्लॉक लिखना पड़ेगा। बट ऐसी प्रैक्टिस रखो कि एक लाइन रहने दो या एक से ज्यादा लाइन, मैं ब्रैकेट लिखने की आदत रखूंगा। नाउ हाउ दिस वर्क्स, तो एट द एंट्री it will check the condition. If the condition is true, it will perform the body and again come back to check the condition. So it will keep executing that body till the condition is true. And when the condition becomes false, it will stop the while loop and continue with the code which is after that while. While के बाद जो भी कोड है वहां से कंटिन्यू करता है, ठीक है। यहां भी शुरुआत में ही कंडीशन फॉल्स रहेगा तो ये बॉडी एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हो, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। Execute code when a condition remains true. So till the condition is true, keep repeating. And the moment condition becomes false, stop. Syntax देखो, while condition, code to repeat. So at the entry, it will check the condition. If true, perform this code and come back again to check the condition. So obviously in this code, you will write some statements which will make that condition false in the near future. Understanding?
ये कोड ब्लॉक में ही आप कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स लिखोगे जिससे नियर फ्यूचर में ये कंडीशन क्या होने वाला है, फॉल्स। एंड अगर आपने ऐसे स्टेटमेंट नहीं लिखे रहेंगे तो ये कभी भी फॉल्स नहीं होगा और ये इनफाइनाइट में स्टक हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल देखो, लेट काउंट इक्वल टू 0। तो काउंट एक वेरिएबल है, राइट, इनिशियलाइज टू 0। फिर व्हाइल लूप शुरू हुआ, कंडीशन लिखा है काउंट लेस देन 3। So is 0 less than 3? Yes. Come inside print count is 0 and then make it 1. Is 1 less than 3? Yes. Come inside count is 1 and count plus plus 2. Is 2 less than 3? Yes. So count is 2. Count plus plus 3. Is 3 less than 3? 3 less than 3. No. The condition is false and while loop will stop. Agreed? ठीक है। तो while loop ऐसे सिर्फ काउंटर्स के लिए नहीं, बहुत बार ऐसे केस पे आएगा जहां कंडीशन कब ट्रू होने फॉल्स होने वाला है ये पता नहीं है। ये कैसे, ये काउंटर बेस, ये पता है 3 टाइम्स ही चलेगा, but sometimes like you have a number and you are dividing that number, means you are separating the digits of that number continuously. You are dividing by 10 and taking the quotient, dividing by 10 taking quotient, so you don't know when it is going to vanish and become 0. तो जनरली ऐसे कंडीशंस में वाइल यूज होता है। या आप लाइंस रीड कर रहे हैं कहीं से, किसी फाइल में से लाइंस रीड कर रहे हैं एक एक करके, एंड पता नहीं है ये लाइंस कब खत्म होने वाला है, व्हेन एंड ऑफ द लाइन इज गोइंग टू कम। तो ऐसे टाइप के कंडीशंस के लिए वाइल लूप यूज करो। ठीक है, यहां देखो, लेट काउंट इक्वल टू 0 लिया, फिर वाइल, इधर बेसिक वाइल है, जस्ट एंटर करो आपको स्केलेटन मिल जाएगा। मिल गया, कंडीशंस डालो, जैसे काउंट लेस देन 3, console.log and then count plus plus. See, count equal to 0, count equal to 1, count equal to 2. ये काउंट प्लस प्लस जो है वो यहां भी शिफ्ट हो सकता था। काउंट प्लस प्लस ये कंडीशन में भी आ सकता है, कंडीशन में काउंट प्लस प्लस आए तो it will use the old value for checking, but when it come inside the counter is incremented. तो ये काउंट प्लस प्लस यहाँ शिफ्ट हो सकता है, काउंट प्लस प्लस यहाँ आएगा, क्या अलग अलग इफेक्ट्स आएंगे सब चेक करो। अब यहाँ देखो, इनिशियली अगर मैंने 3 दिया, इट विल नॉट गिव सिंगल आउटपुट, एक भी नहीं, क्योंकि इनिशियली कंडीशन फॉल्स है। देखो, नो आउटपुट कम। सो विद दिस इट प्रूव्स दैट व्हाइल लूप इज अ एंट्री कंट्रोल। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में डू व्हाइल लूप देखेंगे, फिर थोड़े दो स्पेशल टाइप के फॉर लूप्स है, फॉर इन एंड फॉर ऑफ, वो देखना है, राइट। फिर थर्ड कैटेगरी को जाना है, दैट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू, ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन।